Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is the structure of oxides of nitrogen. Subject chemistry. Structure of oxides of nitrogen. So we will write name, formula, oxidation state of nitrogen, resonance structure. First is dinitrogen oxide, or you can say it is nitrogen first oxide. It is also called laughing gas. Its formula is N2O. It is also called nitrous oxide. The oxidation state of nitrogen is, here the oxygen is more electronegative than nitrogen, so oxygen exists in -2 oxidation state. The compound as a whole is neutral, so N2 must have +2. क्योंकि दो नाइट्रोजन है, we have to divide +2 by 2, that is nitrogen is in +2 divided by 2 +1 in +1 oxidation state. +1. This is the oxidation state of the nitrogen and dinitrogen oxide, or nitrogen oxide, first oxide, or laughing gas. The resonance structure of N2O is N triple bond N O. We have to complete the octet. So these are 3, 2. ये नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3. So the nitrogen has, this is 2p3. In 2p3 it is px1, py1, pz1. So in the p orbitals, in each p orbital nitrogen has one electron and one lone pair of the electron, that is 2s2, which is completely filled. तो वो दो इलेक्ट्रॉन ये है, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. Similarly in the oxygen we have 2, 6, 8. This is the lone pair of the, here we have lone pair of the electron of this nitrogen, which is donated by nitrogen and forms the bond with the oxygen. So it has slightly negative charge or the positive charge. तो अगर आप देखोगे कंप्लीट ऑक्टेट है 2, 6, 2, ये दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड है 2 और 4, 6 और 2, 8, 6 और 2, 8, 2, 4, 6 और 8. This is the lone pair of the electron which is donated by the, so this bond is formed by the lone pair of the electrons of the nitrogen. So nitrogen develops positive charge, or and oxygen
both the electrons are from nitrogen and select negative charge, or we can show it without positive and negative charge, or we can also show its structure like this. ये दो इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होते हैं यहाँ पर, सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस। We can show the charge or we cannot show the charge on the nitrogen atom. So this is the resonance structure, or we can show the resonance structure like this. This is the resonance structure of dinitrogen oxide. Number second is nitrogen. This is first, this is second. Monoxide, or it is nitrogen first oxide, two oxide, second oxide. How? Or it is also called nitric oxide. So its formula is NO. And why it is called nitrogen second oxide? Oxygen is more electronegative than nitrogen, and all the compounds in the oxygen is present in the compounds linked with the atoms which are less electronegative than oxygen. Oxygen has -2 oxidation state. So -2 oxidation state, the compound as a whole is neutral. So in nitrogen first oxide, nitrogen has +2 oxidation state because the compound as a whole is neutral. So it is +2. Nitrogen monoxide or nitrogen second oxide, or we can say it is nitric oxide. It is in nitric oxide or nitrogen monoxide, nitrogen is in +2 oxidation state. So the resonance structure is N double bond O. तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 6 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑफ दिस, दो इलेक्ट्रॉन पेयर दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं, एंड वन एक रहता है यहाँ पर इसका पीजर का लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन आल्सो शो इट लाइक दिस, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, and this electron shifts here. So this is negative charge and this is positive charge. Or you can show it like this, नाइट्रोजन ये लोन पेयर यहाँ पर होता है N, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. This is nitrogen monoxide. Number third is dinitrogen trioxide. That is N2O3. In dinitrogen trioxide, we can write it as nitrogen third oxide also. How? In N2O3, oxygen is in -2 oxidation state, -2 into 3 हो गया -6. So the compound as a whole is neutral. So N2 must have +6 charge. So N2, we will divide +6 by 2. 6 by 2, that is +3. So in N2O3, nitrogen is in +3 oxidation state, and the structure of the compound is N
double bond O, double bond O, single bond O. Now electron distribution is like this. This is 2, 4, 6, 8. ये जो नाइट्रोजन है 3 electrons, single electrons makes 3 covalent bonds with nitrogen and the oxygen atoms, and we have now one lone pair of the electron, that is 2s2 का lone pair of the electron वो यहाँ पर nitrogen पे है. Similarly we have 2, 4, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. This is the bond which is lone pair of the electron इस नाइट्रोजन का है, वो ये बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, so it develops positive charge. This has negative charge. Again we can show it like this. ये डबल बॉन्ड एक ही साइड में नहीं हो सकते हैं, it can be in 2 different sides, so we can write it structure like this also. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2, 6, 8. तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा. This is positive charge. We can show the charge or we cannot show the charge. Again, dinitrogen oxide N2O oxidation state +1. रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमें दिखाने हैं, उसके अलावा हम इसके प्रॉपर्टीज और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी दिखाएंगे. इट इज कलरलेस न्यूट्रल gas and is a linear molecule. It is a linear molecule. NO, it again is colorless, neutral gas. Again, it is a linear molecule. It is blue, solid, acidic solid. N2O3 is blue acidic solid. It is shaped, it is a planar molecule. तो ये planar है. Now we have 3 more, and I will rub the board and write here 3 more. Number 3 is, 4th is nitrogen dioxide or nitrogen 4 oxide. Its formula is NO2. And what is the oxidation state? Why it is called nitrogen 4 oxide? Because here the oxidation state of the nitrogen is oxygen -2 and 2 oxygen -4, so the compound as a whole is neutral, so the nitrogen is +4 -4 0, so it is +4. And the resonance structure is nitrogen O
show it like this. दो चार छः आठ. And here this is the bond which is donated by the oxygen, the lone pair of the electrons. तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन देखिए ये this is lone pair of the electron. This is 1s2 2s2. This is the lone pair of the electron of the nitrogen in the outermost shell, shell number 2. This is 2px1 2py1 2pz1. तो अगर ये नाइट्रोजन हम ले लेंगे तो एक तो ये दो बॉन्ड बनाता है, दो सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है और ये दो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है और बॉन्ड बनाता है विद द ऑक्सीजन. सो इट डेवलप्स नेगेटिव चार्ज, डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज. और ये ऐसे भी हो सकता है कि एंड द ऑक्टेट इज कंप्लीट 2 6 2 4 6 8 2 4 6 8. Now the octet is complete and we can show it also like this. This is negative charge and this is positive and this is lone pair of the electron. It is brown, solid, either solid or liquid. It is nitrogen dioxide है, it is a brown gas, acidic gas. It is brown, not solid liquid, but it is a brown acidic gas. And its shape is angular. After this NO2, we have nitrogen, we have dinitrogen, tetraoxide or nitrogen 4-oxide. The formula is N2O4. The oxidation state of the nitrogen in this compound is N2O4 is 2 4s are 8 and 8 and we have 8 minus 8 and इसका प्लस 8 होना चाहिए तो प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4. It is in plus 4 oxidation state. Now its structure is like this: N double bond O, double bond O, single bond O, single bond O. 2 6 2 4 6 8 2 4 2 4 2 4 6 8. Now how ये जो नाइट्रोजन है it makes 3 single bonds. With 3 single bonds it forms 3 covalent bonds. एक बॉन्ड 3 कोवलेंट बॉन्ड, एक इसके साथ 2 इसके साथ. और लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इसका ये वो शेयर करता है इस ऑक्सीजन के साथ. सो इट डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज एंड इट डेवलप्स नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली द स्ट्रक्चर लाइक दिस. और वी कैन शो इट लाइक दिस. ये जरूरी नहीं है कि दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड में हो. वी कैन शो इट लाइक दिस. ऑक्सीजन nitrogen
ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन वाला ये ऊपर पी हो सकता है स्ट्रक्चर में। नेगेटिव चार्ज and positive charge. So it is either solid or liquid. Acidic, in nature and is planar molecule. It is in solid form or in liquid form, acidic in nature and is a planar molecule. Now the fifth one is sixth. This was fifth, and the last, that is sixth. Sixth is dinitrogen pentoxide or nitrogen 5-oxide. Its formula is N2O5. So we will write the oxidation state of the nitrogen 5-oxide, that is nitrogen pentoxide, that is oxygen. In N2O5 we have oxygen in the -2 oxidation state, so -2 into 5 is -10. This N2 must be +10, तो +10 जब ये होगा, so that the compound as a whole is neutral. लेकिन N है 2 times, we have to divide it by 2, 2 5s are 10, so it is in +5 oxidation state. So in N2O5 dinitrogen pentaoxide, nitrogen is in +5 oxidation state and its resonance structure is NO double bond O double bond O O. How? Nitrogen. 3 lone pair of the electrons form 3 bonds with 2 oxygen atoms, right? And 1 lone pair of the electron, it donates the electrons, and oxygen has 6 electrons, 3 electron pairs, 6 electrons, और 2 हो गए, इसका octet complete हो गया. Now oxygen forms, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे, 2 बॉन्ड्स नाइट्रोजन के साथ बनाता है, तो 2 और 4 और 6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये अब ऑक्सीजन के भी हैं और नाइट्रोजन के भी है, तो 2 और इस बॉन्ड के 2 और 2 4 6 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 8, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये नाइट्रोजन का है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज, 2 4 6 और 8, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये एक बार नाइट्रोजन के साथ और एक बार दूसरे नाइट्रोजन के साथ बनाता है, लाइक दिस. अब इस नाइट्रोजन के 2 और 6, 2 4 6 और 8, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, तो ऑक्सीजन को ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट करता है, ये बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन के साथ, and these are the electrons of this nitrogen, so it develops positive charge. Similarly, like this, we have this oxygen has 8 electrons. Or this structure can also be written, resonance structure can also be written like this. Can also be shown like this: nitrogen
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो डबल बॉन्ड एक ही साइड में है, this can be double bond and this is single. Again the electron distribution of the electrons is the same. दो चार छः आठ, दो चार छः आठ, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और वी कैन नॉट शो द चार्ज, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे दिखाए या ना दिखाए। अगर आप ना भी दिखाए तो भी ये इट इज़ कंसिडर्ड कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन। So this is the resonance structure of dinitrogen pentaoxide. It is ये जो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये जो है ये कलरलेस सॉलिड है, ये कलरलेस सॉलिड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड is a colorless solid acidic in nature and has planar structure. तो यहाँ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी, वो भी कलरलेस है, वो चाहे सॉलिड होगा या लिक्विड होगा लेकिन कलरलेस है, और एसिडिक इन नेचर वो भी है। N2O5 is acidic in nature, this N25O5 too is acidic in nature. Only the first two, that is dinitrogen N2O dinitrogen oxide monoxide and 2O और नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो जो है वो only the first two oxides or neutral, otherwise the other four are acidic in nature. So these are the structures of oxides. These are the structures of the oxides of the hydrogen.